Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Shirli Sadri Wasalli Amri. Wahlul Uqdatam min Lisani Yafqahu Qawli. So before I start the presentation, I would like to know that everyone that you can hear my voice. I'm audible. Okay. Is it better now? Okay, great. So thanks to the SSK Incubation Center for giving me this opportunity to share some tips for budding entrepreneurs and those who already started their business and in their journey to make it a scalable business. So the first of all, the topic of today's presentation is like I was just thinking that what kind of tips that one can provide to startups considering current situation and वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो मतलब कभी भी आपको किसी भी स्टेज पर अगर आप हो तो आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला एक बिजनेस रेसिपी डेवलप करने में आपको हेल्प आउट करेगी. And though there are many startups, many businesses started every year, every month, but the most important thing it's that how you sustain it. So I will try to share some tips and some framework that how you can make sure कि आपकी जो business है वो scale भी करे और वो sustain भी करे. So before starting the presentation, I would like. Okay, so what do you want from my side? Okay, Fiza said that Fiza and Hani Khan, they said that I'm not audible. आपको आवाज आ रही है अब Hani and Fiza? Please confirm. Okay, great. अब सही है आवाज? Is it better now? Hello, is it better now? Okay, great. And I hope you can see my screen. Okay. So before I start the presentation, I would like to give a little bit intro about myself. That I'm one of the alumni of IoBM and also one of the visiting faculty associated with management department since like more than 6 years. And one of my major courses which I used to teach at CBM is technology, operations, and innovation. Apart from it, I've been associated with IT and telecom industry since more than 12 years. I've worked with Microsoft, Nokia, Unified Communications, Alcatel-Lucent, and recently I've associated with Founder Institute. It's a global startup accelerator program based headquartered in Silicon Valley. So I'm one of their directors at Karachi chapter. Apart from it, I am running my own company since 2014. It's about Vision Eye, where we help with SMEs, corporate sector, and startups, and providing them consultancy and workshops related to design thinking, innovation, entrepreneurship, and latest exponential technologies. So the first slide I would like to showcase here is what you can see here. I would like to make this session more interactive. तो usually मैं आप लोगों से सवाल करता रहूँगा. I hope कि आप लोग उसमें जवाब देते रहेंगे. So what this picture shows, पहला word क्या आता है आपके दिमाग में जब आप इस picture को देखते हैं?
COVID-19. Okay. And आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Okay. Acha. So the purpose of putting this slide in the beginning, it's like before 2020, everyone have their plans. Everyone is excited that they, that they have many plans and they want to execute it in 2020. But suddenly, when in 2020, when COVID-19 hits and especially hits the entire region and especially Pakistan, then things dramatically changed. Jobs cut down, जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, जो जो सेल्स है, जो कंपनीज की हो रही थी वो नहीं हो पाई. And due to that, many companies shut down, many companies opt for cost cutting and so on. So for becoming an entrepreneur, it's very important for you guys to think from different perspective. It's like if, if if you want to innovate and if you want to sustain your business, then you need to adopt an approach that is unconventional, that is not similar to what others are doing. So before moving to the next slide, I would like to know from any one of you that how do you define an entrepreneur? What is the definition of entrepreneur in your perspective? Yes, please. Okay. Anyone else? Anyone else would like to share? Okay. So yes, you are correct. May I know your name? क्या नाम है आपका? Bilal. Okay, Bilal. And Bilal, which startup you have right now? Okay, great. So before COVID-19, everyone has their own plans, but the moment we started with 2020 year, uh, I would appreciate if you guys can mute your mic because आपकी आवाज आ रही है यहाँ पर बहुत. Thank you. So many businesses, startups, SMEs has their own plans for 2020, but the moment COVID-19 hits, entire game plan changed. So yes, every day, and we used to hear that Pakistan is a land with full of problems. But we also remember that whenever there is a problem, there is an opportunity. So to start my presentation, I would like to say that okay, wherever you are, uh, in no matter what the situation is, there is always a room for improvement, and there is always a ray of hope, uh, positivity, which you can explore with a go-getting mindset. So when there is a difficulty, there is also a opportunity as well. So as Einstein said that in the middle of difficulty lies opportunity. So how we can crack opportunity and how we need to think different. Anyone would like to add on? I'm saying
that in current situation that everyone is like puzzled, especially like people, students and faculty members, all associated with educational industry, especially with university. Like last 4 to 5 months were very hectic. Uh, Both faculty and students opt for LMS. There are different challenges they are facing, internet issues, electricity issues. So there are different problems we are facing. But being an entrepreneur, uh, how would you respond in this situation? Yes, please. Excellent, excellent. Anyone else would like to add? Okay. So, whenever there is a problem, or there is also an opportunity. The bigger the problem, the bigger the opportunity. So, 2020 start with COVID-19, and everyone was puzzled. They were thinking like what we can do. But now, like since 2 months, जब से lockdown था, तब से लोग परेशान थे. But now things are जो लोगों का माइंडसेट है और जो उनके एक एटीट्यूड है वो थोड़ा सा तब्दील हुआ है. ठीक है, जो एक फियर फैक्टर था, नाउ पीपल आर starting their businesses, they are opening their shops, though there are risks, but it's also one need to think about that how they can transform their current business model and come up with a new business model. So this presentation is primarily more about that how one can adopt to the with the current situation, and how you can change your business model. So as you can see here that sometimes in life everything goes smoothly and sometimes the unexpected happens, which has already happened. So the important thing is to know how to turn problems into opportunities. And one of the important aspects for becoming an entrepreneur that you should know and you should act like that, you should try to explore positivity and opportunities within the same problem. Like अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो उसमें से आप ये देखते हैं कि क्या क्या नई उसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम में रहते हुए कोई नई पैथ जो है टू एक्सेल योर बिजनेस वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो एज पर जनवरी 2020 जो ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इट्स लाइक 7.75 बिलियन, and more than 5 billion people having access to mobile phones, and it's like more than 50% of the population have access to the internet, and 3.8 billion people have connected to the social media. So this is the statistics of the world from the digital perspective. I would like to know how many of you are aware that what is the how many mobile phone users that we have in Pakistan. Any idea? Any rough guess? 10 crore? You mean 100 million? 160. And what is the size of the population Pakistan has right now?
So as per January 2020 statistics, there are like more than 218 million people lives in Pakistan. Okay, this is the current size, and you're correct that it's like more than 161 million mobile users we have right now. In this 161 mobile users, we also have like किसी के पास अगर दो सिम्स हैं तो वो भी उसमें काउंट हो सकता है, ठीक है. बट फ्रॉम दोज 218 मिलियन पीपल अगर हम यूनिक यूजर्स पे जाएं तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 130 120 million unique users, or you can say active users, are having mobile phones. So it's like 50% of the population. And if you see the third statistic, which is related to internet, so it's like one third of the population has connectivity within the internet. They are connected to the digital world. 76 million people have internet access, and 37 million people have they are active social media users. So what, when you see these statistics, what comes in your mind? Okay, so what opportunity do you see here? Okay, okay. Anyone else? Correct. Anyone else? Okay. So uh, इफ यू रिमेम्बर, जब ये लॉकडाउन की सिचुएशन स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में, और ज़्यादातर जितनी भी शॉप्स थी और जितने भी रिटेल थी वो सारी बंद हो गई थी, तो क्या लोगों ने अपने काम करना बंद कर दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं. उन्होंने नए बिजनेस मॉडल, नए एवेन्यूज, नए चैनल्स को एक्सप्लोर किया, एंड दे ऑप्ट व्हाट्सएप, इंटरनेट, एंड दे ट्राई टू सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन. So this is the opportunity that we have right now. Uh, Pakistan is one of the emerging country in the world right now, especially in terms of youth. More than 60% population lies in this youth bracket, and there is a humongous opportunity for growth. So, and still internet, we have 4G, and in coming years we'll have 5G. So platform is set. 10 years ago, if you remember this thing, it would be very difficult. At that time, we had 2.5G. In 2012, 2013, we have seen 3G, and then now it's 4G. So now the platform is ready. And why I'm talking about the platform? Because uh, I will answer this part in after this slide. Next slide. So I would like to know that if you recall 10 years ago, if I ask you कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड वाइड जो टॉप 100 कंपनीज थी 10 साल पहले, तो आपके दिमाग में क्या नाम आएगा? जी. हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, ओके. ओके. Yes. So if you see this slide, these companies like Amazon, Airbnb, Netflix, Uber, Facebook, these are all currently leading the market, leading the industry. They are uh, leading their own domain. Like previously, Walmart, people were preferring Walmart in America.
Now Amazon is world biggest retailer, online marketplace. Then previously there was like Wyndham, uh, and there are multiple hotels, but now majority of the people preferring Airbnb. Uh, Previously there was people were looking for movies at blockbuster platform, but now Netflix is disrupt the movie industry, and same goes with Uber. So what is the unique factor of these companies? Okay, what else? Okay, and anyone else? Customer needs. Okay, or ओके, अगर हम अमेजोन अमेजोन को एक्सक्लूड करें, ये सारी कंपनीज आज से 15 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, उबर, फेसबुक, 2005 में ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है? ये सारी कंपनीज जो हैं उसके बाद आई। सेकेंडली, one of the major reason of these companies is now is one of the biggest companies right now in their own domain. It's one of the reason is the platform, that internet is here, everyone has access to mobile phones, infrastructure is ready, and if anyone would like to sell any shirt, any goods online, they can easily reach 1,000 customers within few hours, as compared to opting a retail model जहां पर आपको कस्टमर का वेट करना पड़ता है, ठीक है? तो बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है। ओवरऑल जो पहले कंपनीज थी और आज की जो कंपनीज हैं, उसमें उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है, डेफिनेटली इट्स विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन. So one of the major aspect that one company or startup should consider is that they should have a belief and also try to innovate as a continuous process. It's not like innovate once a year. They should innovate on a regular basis. So how to innovate and what are the things one can need to innovate? एक entrepreneur के लिए वो क्या mindset होना चाहिए? Now we'll discuss those things. The first aspect which I would like to discuss is achieve your impossible. So we know that it's very difficult to survive in tough times. But when we talk about entrepreneur is the one who persevere and with his full dedication, he try to convert impossible into possible. So whenever whatever the idea you have in your life, ठीक है, आपको लगता है कि लोग कहेंगे कि यार ये काम नहीं हो सकता है, but I believe whatever you thought, whatever जो भी आपके दिमाग में वो आइडिया आता है, कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी वक्त पे वो काम कर सकते हैं. आपको लगता है कि वो काम नहीं हो सकता, लेकिन आपको कंपेटिटर कहता है, ये दुनिया के किसी और कोने में एक बंदा कहता है कि नहीं यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ. सो आज से 15 साल पहले जब ऑर्कट, हाई फाइव पॉपुलर था, लोग यूज करते थे, तो मार्क जकरबर्ग केम अप विद एन आइडिया ऑफ फेसबुक. That was a university project he did for Harvard, and later on it turns into a $1 billion company. Okay, so whenever you have an idea, जिस तरह से आप अभी SSK इंक्यूबेशन सेंटर में अपने आप के आइडियाज जो हैं वो इंक्यूबेट आप लोगों ने हुए हैं, और आप लोग उस पर आगे 4 months में काम करोगे. So whatever the idea you have, never thought कि ये चीज नहीं हो सकती. Always you should have a firm belief कि ये एक ना एक दिन ये चीज पॉसिबल हो सकती है, ठीक है? And for that you need to try to recall this quote by Alvin Toffler. As he said that you should try to learn
unlearn and relearn. So it's not, in the 21st century, it's not about those who cannot read and write, but it's for those who cannot learn, unlearn, and relearn. And when we talk about entrepreneurship, when we talk about startups, it's a journey with full of learning. Every day you come up with new surprises. The pricing that you set in the beginning to launch your product, when you entered into the market, when you try to sell that product to the customer कहते हैं यार ये तो बहुत expensive है, या ये आपकी प्रोडक्ट में वो फीचर्स ही नहीं है जो आपके दूसरे कंपेटिटर के प्रोडक्ट में है. So it's very important to learn, unlearn and relearn. ठीक है. जो कुरान की जो पहली आयत है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहला अल्फाज जो कुरान का जो नाजिल हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पे अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से, वो था इकरा, पढ़. ठीक है. तो इल्म जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता. इल्म की जो जर्नी है वो लामहदूद है. ठीक है. और इल्म जितना भी आप सीखें उतना कम है. इसीलिए कहते हैं कि एक अक्लमंद आदमी में और एक बेवकूफ़ आदमी में अगर आपने फ़र्क देखना हो तो उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो है नॉलेज का, वो है इल्म का. ठीक है. तो जितनी नॉलेज आपके पास होगी, जितना इल्म आपके पास होगा, उतने ही ज़्यादा आपका जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो इनहेंस होगी. और जब जितना ब्रॉडन आपका नॉलेज होगी, उतनी ज़्यादा आपके अंदर शऊर, विजडम जो है वो नर्चर करेगा. So it's very important that you should try to embrace your mistakes, or if I can say, embrace failures. स्टार्टअप्स और ये खास तौर पे ये जो आपकी जनरेशन है, इसमें ये माइंडसेट होता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा. बट जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो आज इस लेवल पे हैं जहाँ पर वो एक उनको पूरी दुनिया जानती है. उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि वो उन्होंने अपने फेलियर से सीखा. ठीक है. So success is not the opposite of failure. Failure is not the opposite of success. It's just the first step towards success. तो जब आप अपना माइंडसेट चेंज कर देंगे तो आपके लिए जो चीजें पहले नामुमकिन थी वो मुमकिन हो जाएगी. So this is one of the key learning for this first point in Achieve Your Impossible. They should try to learn, unlearn and relearn. So when we say learn, unlearn and relearn, it's all about mindset. It's all about that how you perceive things. It's all about what is your day-to-day game plan. So to conquer, you should try to focus on the thinking pattern. कि आप किस तरीके से पहले सोच रहे हैं और पहले आप कैसे सोचते थे. तो वो लोग जो इंक्रीमेंटली सोचते हैं, जो एक स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, जो अपने प्रीवियस एफर्ट्स के बेस पे अपने फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे होते हैं. सो दे हैव इंक्रीमेंटल थिंकिंग. their thinking is based on the current circumstances, current problems, and somehow they try to undermine their potential. ठीक है. उनको अपने हिडन टैलेंट पता नहीं होता और उस पे वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज इर्द गिर्द हैं उसी पे ही वो इन्हिसार कर रहे होते हैं. एंड विद वेरी यू कैन से वो रिस्क लेते हैं, लेकिन इतने ज्यादा रिस्क एवर्स नहीं होते. उनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती जितना कैपेबिलिटी उन लोगों के अंदर होती है जिनके अंदर एक्सपोनेंशियल थिंकिंग होती है. एक्सपोनेंशियल थिंकिंग और इंक्रीमेंटल थिंकिंग में क्या फर्क है? इंक्रीमेंटल थिंकिंग इट्स अबाउट व्हेन यू ट्राई टू फोकस ऑन इम्प्रूव थिंग्स 10%. आपने कहा कि मेरी ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को पहले साल मुझे, लेट्स से अगर उसकी मार्केट साइज 5000 लोग हैं, लेट्स से 5000 लोग हैं, और आप कहते हो कि मुझे इस प्रोडक्ट को पहले साल 1000 लोगों में जो है वो सेल आउट करना है. एंड देन आफ्टर 1 ईयर हर महीने मैं उसमें एक 10% का इंक्रीज लेकर आ रहा हूँ. बट अगर आप एक्सपोनेंशियल माइंडसेट पे जाएं, एक्सपोनेंशियल माइंडसेट इट्स नॉट अबाउट 10% इंप्रूवमेंट, इट्स अबाउट 10 times इंप्रूवमेंट. Take an example of Google or IBM or Amazon. They're not trying to increase their employees' productivity or increase performance in their product and services by 10%. They try to increase the outcome 10 times. So instead of focusing on 10%, you should try to focusing on 10 times. Like इस तरीके से आपकी सेल आज इस दिन से मई 2020 से लेके मई 2021 तक
इस तरीके से आपकी सेल 10 टाइम्स बढ़ जाएगी. दैट्स अबाउट एक्सपोनेंशियल माइंडसेट. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि आप कहें कि 100% मार्केट शेयर में से मैं अपना 10% मार्केट शेयर ले लूं, आपको ये सोचना चाहिए किस तरीके से आप ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं और आप एक नई मार्केट स्पेस क्रिएट करते हैं, या आप उसी मार्केट स्पेस को रीसेगमेंट करते हुए अपने मार्केट को 10 टाइम्स बढ़ाते हैं. दैट्स द फर्स्ट थिंग. Second, instead of focusing on short-term goals, you should try to focus on multiple horizons. हो सकता है जिस तरीके से एग्जाम्पल आप अगर आपको गूगल के एक कंपनी है, उसका एक डिवीजन था पहले, अब तो एक अलग हो गया है. गूगल अब एक सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, बल्कि इट्स सिस्टर कंपनी ऑफ अल्फाबेट. तो अल्फाबेट इज वन ऑफ द इट्स द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, जो जिसके अंडर बहुत सारी कंपनीज हैं. तो गूगल की एक अल्फाबेट की कंपनी है जिसका नाम है एक्स, जिसका प्रीवियसली नाम था गूगल एक्स. तो गूगल एक्स क्या करती थी? गूगल एक्स का ऑब्जेक्टिव ये था, they have an ambition to work on big problems with breakthrough technologies and coming up with radical innovation. तो जब आप रेडिकल इनोवेशन और ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, तो फिर आप नए प्रोजेक्ट्स पे चले जाते हैं. वो प्रोजेक्ट्स आपने पहले कभी सोचे भी नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट है गूगल का जो आज से 5 साल पहले गूगल ने कंसीव किया था. उसका नाम है प्रोजेक्ट लून. प्रोजेक्ट लून इज अबाउट कि हाउ वन कैन गिव इंटरनेट एक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड इन एरियाज जहाँ पे आपकी टेरेन काफी रफ होती है, माउंटेन्स हो गए. तो गूगल ने सोचा कि अगर हम एक बलून बनाए और उस बलून के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्टिविटी on based on low latitude हम लोगों को प्रोवाइड करें. So instead of putting mobile towers on different terrains, they should try to come up with a thought कि जहाँ पर उन्होंने एक बलून बनाया और उस बलून के थ्रू उन्होंने इंटरनेट एक्सेस जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोवाइड किया. I'll just put a link on the chat so you can watch it later on. So, and the last thing is about instead of risk averse करें, you should try to focus on experiment and learning. This is very important, and this is what I have tried to mention in my last slide, that you should try to learn, unlearn and relearn. अगर आप risk averse होंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, या आपका जो knowledge की trajectory है वो काफी slowly and gradually move करेगी. लेकिन जितना आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जितनी ज्यादा आप नई चीजें करेंगे, उतना ज्यादा आपका लर्निंग कर्व एनहांस होगा और आप एक एक्सपोनेंशियल माइंडसेट आ जाएगा. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इट यू शुड आल्सो ट्राई टू थिंक अबाउट कि किस तरीके से वो जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम कैसे अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. टॉक अबाउट एआई, टॉक अबाउट मशीन लर्निंग, टॉक अबाउट डेटा साइंस. दीज आर IoT, 3D printing. These are all emerging technologies which are like exponentially increasing, and in the next 10 years things will be totally changed with the help of these technologies. अभी जिस तरीके से कुछ अरसे पहले हमारे एक दोस्त हैं, जब ये कोविड-19 के स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में 26 फरवरी को जो केस आया था, तो उस वक्त से उन्होंने जो है वो वेंटिलेटर्स पे और जो है वो PPE जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उन पे काम करना शुरू कर दिया था. तो यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी they came up with a glass cover जहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं, और जिससे वो डॉक्टर्स जो हैं वो पहन सकते थे, और जो भी पेशेंट के पास अगर वो जा रहे हैं तो उनके सामने जो इंटरेक्शन है, वो जो भी चांसेस हैं कोरोना फैलने के, वो मिनिमाइज हो सकते थे. Another friend of mine, they came up with an idea of open source ventilator, and recently last week they have tested that ventilator in Doha hospital, and majority of the parts is designed using 3D printing technology. So another lesson for all of you guys, for all those startups who incubated in SSK incubation program, is you should try to adopt new technology whether you are techie or not, because in the next 10 years
No one will be asking you कि आपने IELTS किया है, आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी है, आपने स्पेनिश सीखी है, आपने इंग्लिश सीखी है. No one will ask. या इवन आपने अरबिक सीखी है. Though these are things important, these languages are important from the cultural perspective, from the learning perspective, but to excel for the business, it's very important to learn machine languages like Python, R. Even in schools based in Karachi or across Pakistan, एक 6th grade का बच्चा जो है वो अब R पे और Python पे काम कर रहा होता है और उसको पता है किस तरीके से रोबोट को प्रोग्राम करना. आपके भी फैमिली में और नेटवर्क में काफी सारे लोग होंगे जो इस तरह के स्कूल्स में एसोसिएटेड होंगे और इस तरह का काम कर रहे हैं. सो राइट नाउ देयर इज नो एक्सक्यूज कि वी आर नॉट टेकी तो वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग. अब चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि आप अपने घर बैठे विद 3 to 4 5 आवर्स आप बेसिक चीजें सीख सकते हैं. इवन आप अपनी मोबाइल ऐप बना सकते हैं विदाउट राइटिंग अ लाइन ऑफ कोड. ठीक है. सो थिंग्स आर प्रीटी मच इजी दीज डेज, which were not possible like 10 years ago. So first aspect is achieve your impossible. When you come up with an exponential mindset and with an exponential thinking, then the second aspect you should consider is about you should try to create a new business model or try to identify a gap which the competitor is not fulfilling. Okay? So don't try to becoming a me too kind of a company. Okay? कि आप वैसे ही सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करते हैं जैसे आपके दूसरे कंपेटिटर प्रोवाइड कर रहे हैं. उसकी वजह से आप अपने आप को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो यू शुड ट्राई टू क्रैक अ सीक्रेट रेसिपी और ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट अ गैप जो कि आपका करंट कंपेटिटर केटर नहीं कर पा रहा हो. और उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. इट्स अबाउट वैल्यू प्रोपोजिशन, दैट व्हाट यू आर ऑफरिंग टू द कस्टमर, and then how you are offering, how you will be providing that offer to the customer. आपको अपनी वैल्यू चेन पे क्या काम करना पड़ेगा, आपको अपनी मार्केटिंग, अपनी सेल्स, अपनी टेक्निकल रिसोर्सेज, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना पड़ेगा. एंड देन whatever you will sell to the customer, in response how much you will get. So in response to the offer you will sell to the customer, आपको वो क्या वैल्यू मिल रही होगी in monetarily जो आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो. तो आप पैसे कैसे कमाएंगे. एंड डेफिनेटली who is your target market. You should define your target market very delicately. It's not about कि हाँ ये 100 मिलियन की आबादी हमारी टारगेट मार्केट है. नहीं. You should try to narrow down your target market. आपको वो पता होना चाहिए कि आपकी ओवरऑल अवेलेबल मार्केट कितनी है, आपकी सेगमेंटेड मार्केट कितनी है, एंड व्हाट इज योर टारगेट मार्केट. सो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग for you guys to innovate is to come up with a new business model that the competitor is not catering. The third aspect is once you launch the product, then you should not stick with that product and try to carry on with that product. The same mistake which Kodak did or Nokia did. You should try to cannibalize your product. Means कि आज से 15 साल पहले Amazon को लोग किस नाम से जानते थे. Amazon क्यों पॉपुलर था आज से 10-15-20 साल पहले. हेलो. जी, बुक्स की वजह से. ठीक है ना. दैट वाज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस जहाँ पे वो लोग बुक्स जो है वो अपनी सेल आउट करते थे डिफरेंट ऑथर्स की, और फ्रॉम दैट वन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे बुक्स की थी, वहां से उन्होंने अपने पूरा बिजनेस मॉडल को चेंज किया एंड दे केम अप विद अनदर न्यू बिजनेस मॉडल जहाँ पे वो सिर्फ बुक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. बट ऑन दिस स्लाइड ये जो थर्ड पॉइंट है, विलिंग टू कैनिबलाइज इटसेल्फ, इट्स मींस के गूगल ने अपने ही उस करंट प्रोडक्ट की सर्विसेज को कैनिबलाइज किया विद नई न्यू प्रोडक्ट, वो है किंडल. तो इंस्टेड के वो अब लोग जाएं और वो बुक्स खरीदें, उसके साथ साथ गूगल ने फोकस ये किया कि मैं एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करूं, डिजिटल टैबलेट लॉन्च करूं, जो कि लोग वही बुक्स ई बुक्स के तौर में पढ़ सकें. और इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड कैरिंग थाउजेंड ऑफ बुक्स इन अ सूटकेस, they can have carry the same tablet 250 grams, इसका वेट होगा और उसके अंदर मल्टीपल थाउजेंड ऑफ में हंड्रेड्स ऑफ बुक्स उसमें अवेलेबल होंगे. So the third aspect you should learn from this slide is to try to innovate on a regular basis.
इट्स नॉट अबाउट कि आपकी कोई प्रोडक्ट है और वो ही एक कहेंगे, हो सकता है आपकी उस प्रोडक्ट में बहुत सी ऐसी खामियां हो या बहुत सी ऐसी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो जो कि आपकी नेक्स्ट वर्जन जो है उसको रिप्लेस कर सके। तो ट्राई टू फोकस ऑन दोज थिंग्स। फोर्थ, डेवलप अ सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज मेंटेन नहीं किया तो फिर आपका कंपेटिटर जो है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज या नई वर्जन अपडेट्स के थ्रू वो एडवांटेज ले जाएगा। सो one of the important things that why Airbnb is sustaining their competitive advantage is that they're first to the market for transaction based temporary housing site। और जो भी लोग थे जिनको जो 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 टेनेंट्स थे और जो लोग थे जो अपना घर देना चाहते थे ऑन रेंट बेसिस, तो उन्होंने जो है वो अपने पहले एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन जब एयरबीएनबी आया तो उसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और उसके साथ साथ जो भी दोनों पार्टीज हैं, जो जिसका घर है वो जो अपना घर रेंट पे दे रहा है और जो वहां पर आ रहा है टेम्परेरी बेसिस पे, उन दोनों की फीडबैक को एक ही प्लेटफॉर्म पे डाला और सारी ट्रांसपेरेंसी और सारी चीजें जो है सामने रखी। तो इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपका जो सीक्रेट सॉस है वो अप टू डेट होना चाहिए और वो एक ऐसा हो जो कि आपका कंपेटिटर जो है उसको कॉपी ना कर सके। ठीक है, तो यू शुड ट्राई टू थिंक अबाउट कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपके बिजनेस मॉडल में यूनिक है जिसको आपका कंपेटिटर कॉपी नहीं कर सकता। और जब तक आप अपने उस सीक्रेट रेसिपी को, उस सीक्रेट सॉस को सस्टेन करेंगे, तब तक आपको कंपेटिटिव एडवांटेज जो है ना वो बरकरार रह सकता है। फिफ्थ पार्ट is basically the you should try to address a pain point of the customer। तो पेन पॉइंट ऑफ द कस्टमर से क्या मतलब है? आई होप यू गाइस नो अबाउट इट कि किस तरीके से हम पेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। एनीवन? हेलो, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आप थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज। हेलो। जी, अब आपकी आवाज आ रही है। ओके, सो मे आई नो द पेन पॉइंट इन योर स्टार्टअप। आपके जो कस्टमर्स हैं उनका पेन पॉइंट्स क्या है और किस तरीके से आपने उसको टैकल किया है? और आपका बिजनेस क्या है, थोड़ा वो मुझे बताएं। ठीक है। ओके, so are you designing 3D printer or you are providing 3D printing services? Okay. So what is the price of the 3D printer which you design and manufacture? उसकी sorry? Okay. But don't you think कि जो already मतलब the 3D printers available in the market, I mean people used to import from China that also cost under 100,000. Okay.
Okay. But why do you think about why you're not thinking about to provide 3D printing as a service, like software as a service जिस तरह से concept है? तो आप एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे लोग अपनी you can develop a platform where people can put their queries and their design or just एक abstract, and then later on you can come up with a final product. Because one of the challenge that usually startups uh, जिनकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड चीजें होती हैं, जो मतलब जो हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं, तो इन हार्डवेयर प्रोडक्ट्स वेरी डिफिकल्ट, आई मीन इट्स वेरी चैलेंजिंग इन द अर्ली स्टेजेस to scale it, because at that time you need a huge amount of money to uh, manufacture those things on a mass scale. So for that, and also the investor will look into it कि how much money he will put in your business and कितना scalability factor कितना है उसमें. तो जिस तरीके से नाउ डेज जो मैंने एक स्लाइड यहाँ पे दिखाई भी थी, इन इन सारी सर्विसेज प्रोडक्ट्स में जो आपको एक सबसे सिमिलर फैक्टर नजर आएगा वो ये कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट, www डॉट पे सारी सर्विसेज अवेलेबल है. सो नाउ companies are accelerating and excelling, are those which are adopting the digital platform, which are using internet, which are using technology for their business, and how they can use how they can offer those products or services to their customer using online media. That's important. So you should try to also think about कि वो कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि जिससे आप अपने बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. Anyone else would like to add? Okay, and what's the pain point of the customer? Is this okay? And how about if you use augmented reality or virtual reality instead of just putting a QR code? But you can use this technology for new projects like. So the current slide where you can see different screenshots from Vikia app, क्या एनालॉजी बनती है रही है आपके दिमाग में कि ये मैंने क्यों डाली हुई होगी? इसमें ऐसी क्या चीज है जो बाइकिया ने पेन पॉइंट सॉल्व किया जो कोई और नहीं कर पाया?
But why I didn't put picture of Kareem or put picture of Uber? Why I put Baikia? Correct. So one of the reasons that that Baikia is preferred as compared to Kareem or Uber, Baikia they're not doing everything. They focus the need of the target customer and try to champion in that product. So जब Baikia develop हुआ तो Muneeb Maya, who is the CEO of Baikia and founder, so he thought that instead of developing English plus Urdu kind of an application won't solve the problem. और स्पेशली जो पाकिस्तान की आवाम है, खासतौर पे वो लोग जो इस सर्विस को यूज करेंगे या इस सर्विस में एज अ डिलीवरी प्रोवाइडर ये सर्विसेज दे रहे होंगे, उनको इंग्लिश बहुत कम आती है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट बनेगी ही इंग्लिश की पॉइंट ऑफ व्यू से, पर बाद में जाके वो उर्दू में ट्रांसलेट होगी, तो देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो जो यूजर एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें जो है आपको चेंज करेंगी। So since the beginning they decided कि primarily जो application है वो उर्दू based होगी और उसके साथ साथ English based भी होगी. That's one of the reasons that it's so easy and it's user friendly for the end user, for both, for the rider as well as for the delivery जो बाइक वाला जो बाइक चलाता है, ये दोनों लोगों के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है. And that's one of the important aspect that you should try to address a pain point. You should not try to think the product from your perspective. It's very important to think the problem from the customer perspective, and that's why design thinking helps in this case. So I've been conducting different workshops related to design thinking, and design thinking is one of the methodology which is put it by company IDEO, and the CEO and the founder of IDEO was is David Kelly. So they came up with a human-centered design thinking approach where they sum up in 3 steps. First, you need to gather the insights, that what are the problems of the customer, what are the pain points. Try to be try to write the user story uh, in empathetic language, and try to translate what the user feels and think and say. And later, the second stage is the ideate stage, where you translate the problem of the customer and trying to come up with a possible solution that can solve that problem. And last, after ideation, you should try to prototype and testing the product, because if you just came up with an idea, it won't solve the problem. You should also try to prototype and test it, because if you prototype from your perspective, it won't solve the purpose. जो बाइकिया आज इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है और पॉपुलर है, वो इसी वजह से क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर के फीडबैक भी टाइम टू टाइम लेते रहे, एंड देन दे ट्राई टू incorporate those feedback, those suggestions in their application. The sixth and second last aspect of innovation toolkit that you should try to focus on is you should try to move ahead of the curve. What does it mean by move ahead of the curve? Means like right now we are living in industrial revolution 4.0, where artificial intelligence, 3D printing, data science, big data, analytics, IoT, 3D printer, synthetic biology, these are all the current technologies. Though, especially in Pakistan, still these are like new emerging technologies, because like only 10-20% people are using it. Remaining are still opting and prefer the conventional business model and conventional technologies. But as you are about to start your business, and like after 2 years or 5 years, where you will see yourself, you should try to jump to the next curve. One of the biggest reasons Nokia failed, they unable to jump to the next curve. What was the
next curve was all about it. That was smartphone technology. At that time, in 2005, 2006, 2007, Nokia was the market leader across the world. But the moment Google and Apple came up with Android and iPhone device respectively, suddenly the landscape of the entire industry has changed. Why? Because Steve Jobs realized that people don't want the keypad phone anymore. He 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 is one of the visionary entrepreneur, and he foresee that what the market and what the industry will look like and what will be the customer need in future. So at that time he realized and he came up with iPhone. And the moment iPhone launched, one of the second mistake that Nokia did, instead of jumping to the next curve, they just try to focusing on incremental innovation. So what they did at that time, if you remember, one of the most popular phone Nokia had in their era is 3310. But in 2005, 2006, it's about N series, E series, C series, where Nokia was pioneering in mobile phone industry with a cutting edge. In terms of durability, Nokia product was fantastic. In terms of user friendly, it was remarkable. But the moment iPhone launched, Nokia second mistake was they, instead of coming up with a smartphone, they just try to use the same user experience with a touch phone. So without changing the operating system. So the operating system was similar, that was Symbian, but the device which they launched later on was Nokia Asha. That was a touch phone with it's like this is a keypad phone. Later on they launched a candy bar phone जिसका टच स्क्रीन होती थी, नीचे 3 के बटन्स होते थे और उसके थ्रू वो काम कर सकते थे. And later in 2010 when Microsoft got a partnership with Nokia, so Nokia launched Lumia. That was the third mistake which they did, because they still try to, instead of coming up with their own operating system, they get partnership with Windows, with Microsoft. And one of the major reasons for that partnership is to increase the usage of Windows operating system. So it's very important for you guys that you should know that where the current industry in कि जो आपकी current industry है वो किस जगह पर है, और आपके जो competitors हैं locally और globally वो किस curve पे move होने वाले हैं within 1 or 2 years. Whatever the curve is, yes please. Yeah, one of the major your question is correct, but my answer is that one of the major reason that ऐसा हुआ तो नहीं ना, मतलब ऐसा हो सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसकी क्या रीजन थी? One of the major reason is the user experience. I was working at Nokia, and then later on I moved to Microsoft as well. In 2014 till 2014 Instagram की जो एक एप्लीकेशन है जो आज पूरी दुनिया यूज करती है, इवन कि अब जो भी ट्रैफिक फेसबुक पे है वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे जा रहा है, जो आप लोग की जनरेशन है वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम को प्रेफर करती है. So at that time in 2014, Instagram application was published on Windows Phone Store as a beta version. Candy कौन सा वो गेम बड़ा पॉपुलर था, Candy Crush. So Candy Crush was at that time
still not published on Windows Phone Store. Why? Because it's all about the ecosystem. So Apple or Android, or primarily Google or Google and Apple, they didn't only focus about the product, they also strengthen the ecosystem. One of the biggest advantage that Nokia had, that they already had a ecosystem in the form of a Nokia devices, Nokia gadgets, and also they had Nokia store. But from the OS perspective, they unable to innovate. They still thought to that कि जो उनकी जो Symbian device है या जो उनका signature hand phone experience है और जो design है वो वैसा ही रहना चाहिए. And that's one of the reason of Nokia failure. Why? Because the user experience था Windows Phone का, that was not up to the mark. दो कि वो hang कभी भी नहीं होता था. मतलब मेरे पास 2013 से Nokia Lumia था और 2019 तक वो चलता रहा बिल्कुल जबरदस्त. ठीक है, until unless उसकी स्क्रीन खराब हो गई और फिर फाइनली उसकी फातिया पड़ी हम लोगों. But apart from it, the application user experience is different, because though the software developer, the companies who are developing those applications on Android phones and for iPhone platform, they are hesitant to develop a new new application with a new user interface for Nokia platform. ठीक है, जो आईफोन में और जो एंड्रॉइड में के एप्स में जो फर्क है वो इतना ज्यादा नहीं है. मतलब फर्क है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना फर्क विंडोज प्लेटफॉर्म में था. So the fourth failure that Nokia had, that is they were unable to strengthen in the ecosystem. ठीक है, जब आईफोन आया, आईफोन से पहले ही आईफोन ने iTunes निकाल दिया था, and people were aware of कि यहाँ पर एक iTunes एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उनको चीजें मिलेंगी. और iPod एक प्रोडक्ट निकाल दी, iTunes एक पूरा उन्होंने एक स्टोर निकाला. एंड लेटर ऑन आप सबने देखा कि iTunes जो जाके बाद में जाके एक ऐप स्टोर प्लेटफॉर्म में चेंज हुआ. और राइट नाउ पूरी दुनिया जो है वहां से गाने और डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है वो डाउनलोड करती है. तो इट्स नॉट अबाउट ओनली द वन एस्पेक्ट विच इज द प्रोडक्ट, इट ऑल्सो अबाउट द सर्विस, इट्स ऑल्सो अबाउट द इकोसिस्टम. ये उस इकोसिस्टम में आप क्या क्या चीजें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली at the end of the day, it all matters about the user experience. कि आपको user experience क्या है. Though in terms of durability, in terms of performance, Nokia की device आज भी popular है, लेकिन जो user experience जिसका used to हो गए customers, now they are reluctant to go back to the same technology. So right now, wherever you are, whatever the technology you are using in your startup, you should also try to think about okay, what will be the next technology in your industry, in your company, in your market, and how you will be using or adopting that technology, that new curve in the coming years. And last, this is the last slide of my presentation, and this is the crux of the presentation. So अगर आपको assess करना हो, ठीक है, अपने potential को assess करना हो, अपने startup को assess करना हो, so you should try to focus on these things. You can say this is the rubric for startup. So first of all, you need to assess that how big is the market opportunity. Okay? Whatever the business that you have and the market in which you are trying to enter, how big is the market? Or how big is that opportunity? Remember the first slide. The bigger the opportunity, the bigger the problem, the bigger the opportunity. The bigger the opportunity, the bigger the revenue you can generate from that business. Why Google, why Facebook, why Amazon are a billion-dollar company? Because they are not thinking like a 10%. They are thinking they had exponential mindset, and instead of focusing on 10%, they are trying to focusing on 10 times. So wherever you are right now, you should try to think that how you can increase your company 10 times after 3 years or 5 years. Okay. So first aspect that you should consider is how big is the market. Either it's small or it's big. Second, what is the entrance to enter into that market? I mean, that entry stage. Either you are entering
too early as a first mover, or either you are entering into the market as a late entrant. So then you need to develop your strategy according to it. One of the example I would like to give, I would like to know from you guys, which is the number one branchless bank right now in Pakistan? I'm asking which is the largest branchless bank in Pakistan right now? Branchless bank. Okay. Can you hear me now? Is it better? Okay. I'm asking कि अभी इस वक्त which is the largest branchless bank in Pakistan right now? Hello. Okay. Uh, can you hear me right now? Okay. I'm asking कि sure. Branchless bank in Pakistan. Easy Paisa. So do you remember any other competitor to Easy Paisa? Okay. Uh, can you tell me any other competitor to Easy Paisa? Yes, yes. UBL Omni. ठीक है. Good. But do you think कि Easy Paisa जब आया मार्केट में तो उसको कुछ फायदा हुआ होगा एज अ फर्स्ट मूवर? जी बिल्कुल बिल्कुल. So yes. So using Easy Paisa application, you can open the bank account within 2 minutes. It just need your CNIC. That's it. So the second aspect is your entry to the market. Either you are entering early or you are entering late. The third aspect is the team commitment. That how committed your team is. If it is average, and for the team commitment, it's very important to hire and recruit skilled people. Hire those people who are better than you. And instead of thinking about giving them salary, try to sell them your idea, your vision, and try to be a partner. Bring them as a partner on equity basis instead of giving them salary, especially for the early stages. And the fourth aspect is team structure. Either you are working as a solo entrepreneur or you are working as a balanced skill and ownership kind of a thing. ठीक है कि इंस्टेड ऑफ कि आप एक ही पर्टिकुलर स्किल सेट पे फोकस करें, आप मल्टीपल स्किल सेट पे फोकस करें और अलग अलग डिफरेंट तरह के लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट करें ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्यूमेन है वो इनहेंस हो और ब्रॉडन हो. द फिफ्थ एस्पेक्ट इज द स्केलेबिलिटी. अगर आपके बिजनेस में स्केलेबिलिटी नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कस्टमर, कोई भी पार्टनर आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा. ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर दैट इट्स important for your startup
and for your business model to have a scalability factor. If your business model don't have a scalability factor, I'm sorry, no one will show the interest. We'll just focusing on like a आपका जो कर्व होगा ना वो एक तरीके से एक एक लीनियर होगा जो कि बस ग्रो कर रहा होगा लेकिन उस तरीके से स्केल नहीं कर रहा होगा मतलब उस परसेंटेज से स्केलेबिलिटी आपकी बिजनेस में नहीं आ रही होगी जिस तरह से दूसरे बिजनेस में आ सकते दूसरे कंपेटिटर अपने बिजनेस में ला सकते एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज द ग्रोथ एम्बिशन यू शुड आल्सो हैव एन एम्बिशन टू ग्रो द बिजनेस दैट हाउ यू कैन ग्रो द बिजनेस और उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं लाइक if you are focusing on Karachi, you should try to also focusing on exploring new markets, Lahore, Islamabad, entire Pakistan, South Asia region, Middle East region, and so on. So this is the rubric for evaluating your startup potential. And with this, I would like to conclude my presentation. If you have any question, please ask.